Anthem experience the calmness? Nothing was calm at all. हाय, जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, और जो मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं नेहा सना हूँ। इस प्रोजेक्ट के लिए सिड ने बहुत ही मेहनत की है, एज वी ऑल नो ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड, और हम लोगों से भी बहुत मेहनत करवाई है। बट एक छोटी सी मेहनत मैंने उसके लिए और की है बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। कुछ लिखा है, इन सिड्स लेंस वी बिकेम अ बॉलीवुड स्टार, graceful as an actress in chiffon from afar. Even if the place is a beauty and we create magic with glee, yet retakes galore for perfection's decree. A perfectionist indeed with a demand so high, but together we soar, reaching for the sky. Well, बहुत मज़ा आया मुझे ये शॉट्स देने में उसे। So पहले when एकदम शुरू में मैं जहाँ भी घूमने जा रही थी, आई यूज टू जस्ट टेक एक शॉट बना लो, एक रील बना लो एंड सेंड इट अक्रॉस टू सिड, एंड सिड वाज लाइक नहीं, हाँ कपड़े ऐप्ट नहीं हैं, या फिर तुम्हारी एक्सप्रेशंस बहुत फ्लैट हैं, कुछ तो करो, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू। आई लाइक ओके। देन आई वेंट टू अ प्लेस इन थाने कॉल्ड गायमुख चौपाटी, एंड ब्यूटिफुल प्लेस, ब्यूटिफुल लोकेशन। तो वहाँ पे मैंने शूट करके 2-4 शॉट्स सिड को भेजे। मैंने कहा कुछ अच्छा लग रहा है तो जो भी पसंद आए यूज़ इट। ही वाज लाइक परफेक्ट नेहा, वी गॉट इट। आई वाज लाइक ऑसम, हो गया, एंड आई एम डन। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को जो काम दिया था जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली। बट नेक्स्ट डे आई गॉट अ मैसेज एंड सिड वाज लाइक कि नेहा तेरे 4-5 शॉट्स चाहिए, ऐसे 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 ऐसे। आई लाइक अरे ये क्या हुआ। एंड देन ही वाज लाइक तू वहीं पे जा करके रीशूट कर सकती है विदाउट पीपल। भाई मुंबई है, मुंबई में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भीड़ नहीं। सो आई वाज लाइक मैं लोग कैसे हटाऊँ। आई लाइक ठीक है, देखते हैं। सो अभी बीच में आई वेंट टू गुड़गांव टू मीट फ्रेंड्स, एंड वहाँ से हम बवेजा फार्म्स गए। सो आई सॉ दैट प्लेस एंड इट हैड अ वेरी रस्टिक लुक। तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा शॉट लेके सिड को भेजा, एंड शिट वाज लाइक लोकेशन इज़ परफेक्ट, कर ले यहाँ पे, दौड़ यहाँ से वहाँ, दौड़ दौड़ रिकॉर्ड कर भेज दे। तो मैं बन गई मिल्खा सिंह बन के कभी यहाँ दौड़ी, कभी पागलों की तरह वहाँ दौड़ी, और शॉट्स लेकर के सिड को भेज दिया। एंड ही वाज लाइक परफेक्ट, आई गॉट इट व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू एंड इट्स डन। तो एंड जब सिड की शाबाशी मिलती है तो लगता है आह, आई थिंक मिस्टर परफेक्शनिस्ट इज हैप्पी, तो हो गया काम। I think making of this was really fun and I really enjoyed. Sid, अगला project. Thank you. तो स्टाइल आइकन्स के बाद सिद्धार्थ वॉज लाइक गोइंग क्रेजी, और वो कहता था कि मुझे तेरे साथ एक और वीडियो बनाना है, स्टाइल आइकन्स लोगों को बहुत पसंद आया है। तो मैंने बोला यार मुझे तेरे साथ काम वाम नहीं करना है, पैसे वैसे देता नहीं है, बहुत मेहनत करवाता है, सॉरी। बट स्टिल ठीक है। थोड़े दिन के बाद उसने फिर मुझे कॉल किया और कन्विंस कर लिया। तो मैंने बोला कि मैं अपने भाई अजय के पास जा रहा हूँ कनाडा, और वहाँ पे मैं तुझे एक अच्छा शॉट देने की कोशिश करूँगा। कनाडा में क्या हुआ कि मेरा लगेज जर्मनी एयरपोर्ट पे रह गया, और मेरे पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। इनफैक्ट मैंने अपने भाई से कपड़े मांगे, और वो कपड़ों को पहन के मैं थोड़े दिन काट रहा था और वेट कर रहा था कि मेरा लगेज आ जाएगा। अब क्या हुआ, आधे दिन निकल गए, और जो बाकी के आधे दिन बचे थे वो भी इधर उधर कुछ लोकल साइट सीइंग करके हमने ख़त्म कर दी। सिद्धार्थ ने पहले कहा था कि भाई फेब में हमें इसे रिलीज़ करना है, बट अचानक से बोलता है कि नहीं यार मुझे इसे दिवाली के पहले करना है। तो वो भी प्रेशर आ गया और दिन भी कम थे। तो मैंने फिर अपने भाई को बोला कि यार जो भी नियर बाय लोकेशन है वहाँ चलते हैं। लास्ट डे था, मेरी फ़्लाइट थी शाम को, और मैं और मेरा भाई पहुँचे कोरोनेशन पार्क में। हमें वहाँ पे हमारा प्रॉप सामने मिल गया, एक बेंच थी, एक टेबल था, और मैंने शॉट को विजुअलाइज किया और अपने भाई को बोला कि देख तू पहले यहाँ पे इस शॉट को करेगा और मैं कैमरा कैसे रोल करना है तुझे बताऊँगा। अगर अच्छा निकल के आएगा सो वी विल टेक द अप्रूवल फ्रॉम सिद्धार्थ, और आई विल ऑल्सो डू द सेम। तो हमने सिद्धार्थ को शॉट भेजा, और सिद्धार्थ वाज कन्विंस कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है, तुम ऐसे ही कर लो।
जब मैं वो शॉट करने जा रहा था ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही थी, जैसे वहाँ पे जो और लोकल लोग घूम रहे थे वो कभी बीच में आ जा रहे थे, कभी कैमरे का एंगल ठीक नहीं हो रहा था, या कभी मेरा टाइमिंग मैच नहीं कर रहा था। तो और मेरे को टेंशन इस बात की थी कि यार मेरी फ्लाइट ना छूट जाए, तो वो भी थोड़ा प्रेशर था। तो शॉट 2-3 बार किया तो ठीक हुआ नहीं। तो मैंने क्या सोचा कि यार ठीक है, मेरे भाई ने शॉट दे दिया और मेरे को वो पसंद है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल कन्विंस सिद्धार्थ कि यार तू ना अब एक काम कर, टाइम तो और बचा नहीं है इस शॉट को देने का, हम लोग डायरेक्ट हीरो बदल देते। मैंने सिद्धार्थ को कॉल लगाया और सिद्धार्थ से शॉट का अप्रूवल लिया और उसको बोला कि देख सिद्धार्थ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, तू मेरे भाई को ले ले। तो सिद्धार्थ पास शॉट कि भाई रात के 2 बज रहे हैं और ये क्या बोल रहा है। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने इसमें तुझे विजुलाइज किया है और तू ही रहेगा इसके अंदर। तो मैंने फिर जैसे तैसे उस शॉट को दिया और सिद्धार्थ ने ओके भी कर दिया। तो हमने सोचा कि यार एक शॉट तो चला ही गया है सिद्धार्थ के पास, और भी कुछ लोगों को नया दिखाते हैं। तो हमने वहाँ पे एक आध लैम्बोर्गिनी और कुछ गाड़ियाँ खड़ी, तो हमने वहाँ पे भी कोशिश की कि चलो एक और थोड़ा सा फैंसी शॉट हो जाएगा, लंबी लंबी गाड़ियाँ दिखा देंगे जैसे आजकल का ट्रेंड है। तो एक शॉट वो भी हमने भेजा, बट फाइनली आई थिंक यही बीच वाला ही चूज़ हुआ। तो ये था नटशेल में सारा एक्सपीरियंस लव एंथम के लिए। आई थिंक काफ़ी अच्छे से सावरों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेकिन हाँ, इट वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट आई मस्ट से कि मतलब सिद्धार्थ ही वाज a real PIA, if at all you guys know what I'm trying to say. But after 4 countries शूट के बाद फाइनली सिद्धार्थ को एक बहुत ही बढ़िया लगा and thank God it ended there. But after really a lot of attempts in multiple places with landscape, portrait, this, blah blah, finally we gave it a final shot. उसमें भी उसको satisfaction नहीं हुआ था, to be very frank guys, लेकिन finally हो गया. So thank you everyone for an amazing shoot and thanks Siddharth, you really did a commendable job. And yeah, keep the Paulines group and everyone so active. Yeah, so ciao guys. Hi friends, this is Shweta from PCE and wishing you all a very happy Diwali. So now I'm going to share my experience while making Love Anthem. So it all started when I was in US having my vacation, summer vacation with my kids and my parents to my brother's place. So वहाँ पे सिद्धार्थ का फ़ोन आता है कि ही इज़ मेकिंग सम वीडियो एंड उसके लिए मेरे कुछ शॉट्स चाहिए एंड उसका एक ही कंस्ट्रेंट था कि सलवार सूट एंड दुपट्टा होना चाहिए. नाउ अब आई एम हैविंग माई वेकेशन इन यूएस, तो सलवार सूट और दुपट्टा कहाँ से आएगा? आई वॉज नॉट कैरिंग इट. तो फिर मम्मी को बोला कि अपना सलवार सूट मेरे नाप का कर दो और चुन्नी भाभी से लिया एंड फाइनली वो चुन्नी वाला सीन जो है उसके लिए आई एम लुकिंग लाइक हीरोइन एंड ऑल क्रेडिट गोज टू सिद्धार्थ फॉर दैट. और मैं ही क्या, बाकी फ्रेंड्स भी सब बहुत हीरो हीरोइन से कम नहीं लग रहे थे. सो इट वाज रियली अ गुड जॉब डन बाय सिद्धार्थ, हमारे डायरेक्टर साहब. उसके बाद जो दूसरा सीन था वो हमने नोएडा का लिया था मैंने. तो नोएडा में यू नो व्हेन यू गेट बैक टू योर नॉर्मल रूटीन लाइफ तो थोड़ा टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट सिद्धार्थ का इतना कंटिन्यूस रिमाइंडर एंड मैसेजेस आता था कि आई वाज लाइक ही इज सो डेडिकेटेड, तो आई शुड नॉट ट्रबल हिम. और मैंने सच में उसको ज़्यादा परेशान नहीं किया. कुछ फॉलोअप्स के बाद मैंने उसको फटाफट वीडियो भी भेज दिया था. हस्बैंड को पटाया, पार्क लेके गया
एंड फिर वहाँ पे ही कुछ कुछ वीडियो क्लिप्स बनाए, झूला वाला, घूमने वाला। तो बट बहुत मज़ा आया एंड ऑल क्रेडिट गोज टू सिद्धार्थ फॉर पोर्ट्रेइंग ऑल ऑफ अस सो ब्यूटिफुली इन दिस बिग स्क्रीन। बिग स्क्रीन में देखने से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिग स्क्रीन क्या छोटे स्क्रीन में भी मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। सॉन्ग इज़ सो ब्यूटिफुल एंड थैंक यू फॉर कास्टिंग मी इन। और क्या, और नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी करो तो प्लीज़ काउंट मी इन। आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन trust me on that. I will always say yes to you. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गोप। स्वागत है आपका सिद्धार्थ प्रोडक्शन में। आज मैं बात करूंगा लव एंथम वीडियो में मेरे किरदार के बारे में। वैसे तो मैं अपने रोल को लेकर चूज़ ही नहीं हूँ, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि स्क्रिप्ट था ही नहीं। जहाँ तक मेरे किरदार की बात है, मेरा रोल काफ़ी चैलेंजिंग था और डायरेक्टर की डिमांड थी कि उन्हें आउटडोर शूट चाहिए। तो मैंने इसे बहुत ही एक्सट्रीम एम्बिएंट कंडीशंस में शूट किया। तापमान लगभग 17 डिग्री होगी। बैंगलोर वेदर का तो आपको पता ही है, यहाँ पर लोग 20 डिग्री में जैकेट पहन लेते हैं, मैं तो सिर्फ कॉटसूल पहना था। आखिर मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जितने भी मेहनत कर लो, लेकिन किस्मत आपके साथ होनी चाहिए। वो तो ऐसा हुआ कि हमारे लीड एक्टर श्री देवचंदन को वो डेट्स नहीं दे पाए, तो ये रोल मुझे मिल गया। जैसे ही डायरेक्टर सर का कॉल आया, मैंने अपना झिरपानी लक्ष्मी पूजा ऑर्केस्ट्रा कमेटी का काम छोड़ के सीधा शूट के लिए आ गया। जाते जाते यही कहूँगा कि धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा, इतना सारा प्यार दिया। सिद्धार्थ प्रोडक्शन फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ 2024 में, और उम्मीद है उस वीडियो में मैं भी रहूँगा अगर मैंने अच्छी चाटुकारिता का प्रदर्शन किया। धन्यवाद। शूटिंग इन मनाली वॉज वेरी डिफिकल्ट। फिलहाल अभी तो मैं मनाली में नहीं हूँ, लेकिन आई विल टॉक अबाउट इट मोर। वैसे मनाली वॉज होम, क्योंकि मनाली में शूट करना वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। घर जैसा माहौल, क्योंकि अतरंगीज इज राइट देयर एट 7000 फीट। आपको लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। सो आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद सिद्धार्थ कि सिद्धार्थ, इफ यू वांट दिस शॉट ऑन द टेरेस, यू वांट दिस शॉट इन द लॉन। So Siddharth liked the terrace and he said कि टेरेस में अगर तुम शूट करते हो तो थिंग्स आर प्रीटी क्लियर, बहुत ही क्लैरिटी के साथ चीजें आएंगी। सो आई शॉट दैट इन टेरेस। टेरेस में बहुत ही अच्छा फीलिंग था। एक तो आपको फील गुड फैक्टर आता है जब आप मनाली में हो। एक तो है कि आपका खुद का घर है वहाँ पे एंड यू आर सिर्फ शूटिंग इट देयर एंड टॉप ऑफ इट यू हैव अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप बिहाइंड यू। तो आपको जो कॉन्फिडेंस आता है शूट करने का इन मनाली इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि वहाँ पे शूट करना वाज नॉट डिफिकल्ट, इट वाज अ केक वॉक, बिकॉज वहाँ पे आपको लोगों को साइड करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने एरिया में शूट कर सकते हो। और जब कोरापुट में बारिश होती है, शूटिंग इज सो टफ, यू नो। तो डायरेक्टर का ऐसा था कि ही वांटेड द कैमरा टू पैन ऑन मी एंड अ बिट ऑफ मिस्टी माउंटेन इन द बैकड्रॉप। तो कोशिश तो वही रही कि वो हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टू गेट दैट परफेक्ट शॉट इन देवमाली वाज टफ। देवमाली में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था डायरेक्टर को। तो ही सेड दैट नो, यू जस्ट नीड टू शूट एट देवमाली एंड इट नीड्स टू कम रियली परफेक्ट। तो कोशिश बहुत रही, काफ़ी रीटेक्स लेने पड़े उस पर्टिकुलर शॉट के लिए, लेकिन फाइनली आई एम हैप्पी दैट इट्स काइंड ऑफ डन। सिद्धार्थ इज अ वेरी टफ डायरेक्टर टू वर्क विथ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वेरी टफ एज इन वो डांटता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, बट उसको परफेक्ट शॉट चाहिए। हमेशा उसको परफेक्ट शॉट चाहिए ही चाहिए। तो आई नो ऑल द आर्टिस्ट इन दैट वीडियो विल वाउच फॉर इट कि भाई he is never happy with his shot, so he always needs a shot which will really give him lot of happiness कि ये बना है एक shot। so वो challenge रहा मेरा to get the right shot for him, but I am very happy कि finally
सब कुछ अच्छा ही हो गया एट द एंड. हाय एवरीवन, आई एम चंद्रा त्रिपाठी. तो वीडियो के लिए मुझे मैसेज आता है सिद्धार्थ का, जब मैं वेकेशन पे थी इंडिया में. तो मैं उसको बोली कि आई विल गेट बैक एंड मैसेज यू. तो आने के बाद उसको मैसेज किया तो उसको पूरा लिस्ट आ गया कि क्या क्या होना चाहिए. तो वाइट सलवार कमीज़ चाहिए था, वो मेरे पास था नहीं. तो शायद मैं इंडिया में मैसेज कर देती तो मुझे मिल जाता. तो यहाँ पे मैं अरेंज नहीं कर पाई, लेकिन सिद्धार्थ वाज ओके अबाउट दैट. तो हो गया काम. तो फिर फर्स्ट 2 सीन में मैं पिकनिक में थी और मेरे सास से पूछ के कुछ ना कुछ तो कर रही थी, उनसे बात करके. तो वो 2 सीन ऐसे ही हो गया. तो सिद्धार्थ एक ही बार में उसको हाँ बोल दिया, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया. फिर उसके बाद बहुत सारा उसको परेशान की, फिर नहीं हुआ. तो फिर मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था क्या करना है. तो सिद्धार्थ का एक वीडियो आता है, तो वो उसका एटीट्यूड एकदम परफेक्ट था, स्पॉट ऑन. तो वो देख के मुझे लगा कि अरे हाँ, ये लड़की का कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. तो उसके बाद मैंने वो 2nd या 3rd सीन किया है सिद्धार्थ का वीडियो देख के. तो वो एक ही बार में वो हो गया. तो उसके बाद बाकी जितना भी मैंने वॉक किया है उसके लिए आई थैंक टू माई मदर इन लॉ एंड माई सन. मैंने उनको बहुत वॉक करवाया है. तो पहले मैं उनको करने के लिए कहती थी, तो उनका बैकग्राउंड में चेक करती थी. तो उसके बाद में सेम सीन करती थी. तो उसके लिए वो बहुत हेल्प किया है मेरी मदर इन लॉ और मेरे बेटे ने. तो हाँ, ऐसे ही हो गया. बट आई एन्जॉयड अ लॉट दिस प्रोसेस. तो या दैट्स इट. थैंक यू. Done by Siddharth, Nandu, Sabka Bandhu. So shooting for this video, I had 2 challenges and it was fun also. Challenges were it was the monsoon season and it was difficult to shoot outdoor. Location outdoor ka tha and there was an orange warning. Monsoon chal raha tha. Every day it was raining. Second problem was the song. Like I'm an old school classic song lover and I'm kind of stuck in that generation. So ये new Bollywood song के लिए I am not updated. And तो जितना बार भी lip sync करने से वो that was not happening. I was unable to do the lip sync. This is Unmishika Pradhan from the IT branch. Few of you used to call me Lean Hostel. Some of you know me by name Shikha. So I wanted to share my experience today, how it was while shooting for Love Anthem. So it was first of all a very beautiful experience. I anyways love traveling and especially in monsoon I love trekking in and around Pune. I stay in Pune. So yeah, it was a lovely shooting for the scenes or the shots which was demanded by or required by Siddharth. Although it was not very easy, and Siddharth wanted it to be perfect, and I had to shoot again and again, but it turned really well, really nice. And one of the shots is from Pahalgam. All of you, all the actors, and Siddharth especially,
You have put a lot of effort, hard work, and it turned out to be really well. So yeah, thanks to that for pushing all of us, to finish within the timeline. But again, I'm so sorry for the delay, and thank you, Siddharth, again for your patience, because I was unwell almost for 2 to 3 weeks in between. So thank you for being patient with me. And to rest of my friends, I really want all of you. I really want to meet all of you because I really miss especially my hostel days. I really, miss my hostel friends, the moments which we have shared in the hostel, the talks, the overnight fun, Maggie, food, cooking food together. uh, it was beautiful. Those were beautiful moments. So I'll definitely would like to relive at least for a day. Let's meet rest of the college, also college friends, rest of everyone else. I really miss the campus. I miss our canteen, those small little moments. So those are beautiful. Thank you so much, and yeah, bye. Basically, a Love Anthem was specifically designed to give a cinematic experience to all the near and dear ones, uh, and take them to a altogether different world where they can praise, where they can troll, where they can talk about something other than the stereotype of life which each one is leading, uh, something which makes them get entertained, something or the other. So that was the basic motto of designing the video album. And for this specific activity, I needed some bunch of friends who get absolutely crazy with exercise and give their best output in terms of entertainment. So that is how the process, I guess, started. Talking about Saswat, I've known Saswat since childhood. We used to have this competition of dance between both of us when we were kids, specifically during the Teachers' Day, and we used to be envious of each one of us, that who is the best dancer. Later on, became very good friends, and prior to this album, I had worked with him on a similar exercise of video making, that was Style Icons, and he had done a pretty good job. So I had this in mind that whenever I make the next album, I would have him in the beginning. And the second thing was that he is basically having his business at Himachal. So I had this mind as I will be capturing his particular shots with the backdrop of Himachal. So we started with the process. He started sending some very good shots. I basically sent him this idea that how I wanted the things to be figured out, and he gave his own touch, and he came out with some brilliant shots. I'm so proud of him. Shweta's name was suggested to me by the other star cast, Neha, who is also a dear friend of mine. Though I have known Shweta for many years in college, but
it came as a big surprise for me the way she acted. I think she's one of those actors who got the shots in the very first go, and she's a very good catcher. You just explain her once and she gets the shots all right. And I was again blown away by the shot she has given, and the two shots were simply given in one go. So brilliant job done by Shweta. After 19 years of passing from college, we had done a digital reunion of within all our friends, and we had made this program called as Chupe Rustam, in which each of our friends has to show their talents through a Zoom meeting that we had decided to make. And one of the participants was Shikha. Now, I did not had much interaction with Shikha during our college days, but this is after 19 years when we all got close to each other. At that time, Shikha was one of the participants, and she participated in the storytelling part. So she had made a small video, and I was absolutely thrilled to watch that particular video of us. I could sense that she had some great director skills, and from that point of view I decided that whenever I make a video, I would anyways cast her. Srijit is also a dear friend of mine from the days of childhood. His name was actually suggested to me by Varun, that you should definitely cast Srijit in your next video. So whenever this happened, I approached Srijit. So Srijit actually is a very, very busy actor, very, very busy. It's very difficult to get a shot from him because he's too much preoccupied with his work. So he did. I gave him a lot of trouble. I constantly poked him, pinged him, and made him all kinds of trouble. But I think he might have given more than 25 shots to get this perfect shot of his, which I was also not satisfied. But later on, when I edited the movie, when the video, things fall in place. So yes, I thought the shot which he gave him was also a brilliant one. Neha has a very smart attitude. She's very smart, flamboyant, very confident, and that's her characteristic which I wanted in this video. I've known Neha from my college days. I actually wanted to work with her in the days of college. In some of the plays, we actually came up with some idea, but that did not work. So it was there in my mind that I have to work with Neha. So initial days, I had to push her a lot because the expressions that I wanted, the specific backgrounds that I wanted, she was simply not getting it. So she worked really hard for me, and a very sincere actress. And after a lot of persuasion, after a lot of getting back to her, she came back with some brilliant shots, with some brilliant locations. Chanchu, Chanchal Maiti, we call him Chanchu. I also know him from my childhood days, one of my dear friends, and he was actually known as the Michael Jackson during our childhood days. He's still the Michael Jackson. I call him Salman. He's our Salman of the group. So Chanchal had to be definitely there. No, there was no second thoughts. So he was also preoccupied with some of the other of his personal and other works. He had some rain in that area, but
then he came up with these brilliant shots. And yeah, there were a couple of shots which I was not satisfied, and he also tried a lot, taking his kid, taking his wife to the locations and shooting. I could sense that they might also be getting irritated by all this craziness of mine, but being a very dear friend, the things which he had committed, he finally delivered, and his expressions were also fantastic. We hardly had ever talked, that is Chandana and me, during our college days. It was very, very less amount of talk. This story also goes back during our digital reunion time of engineering college. After 19 years, we all got to know each other. So again, in the same Chupe Rustan season 2 digital program that we had launched, so Chandana's family had won the best video award. I think they were, I guess they were first runners up, I guess, yes. And there I had seen a picture of Chandana, and she looked very beautiful. She was looking very stunning. So from that particular clip of hers, I had a sense that she can be a not good, but she can be a great actress. So this is how I approached her, and she was absolutely brilliant. She is also one of the few actors rather, who got every shots correct in the very first shot. So she was also brilliant. Varun, he will be after you like anything. If things are not correct for him, he will give you a blast. He will take you left and right. And he's one of those actors who I get scared to direct, because actually he's better than me. The shots which I had in my mind and which I relate to him, he comes out with something or the other, and which he presents is 10 times better than what I would have thought about. So a brilliant actor, yes, very upfront, no sugarcoats kind of dialogue. He will thrash you like anything, but this is the person, this is a very dear friend of mine, because of whom I have been able to direct such album. So a big thank you to Varun. Gop is a singer, actor, producer, director. Now, whom else would you cast with such multi-talented qualities? It had to be Gop. So there was this particular stance in this song where you have to enact as a singer, and this phase could not have been done by anyone other than Gop. So Gop had to do it. So I had also made him go through lots of trouble, especially he's having a small kid, but still then he took all the pains, went out and did direct himself and came out with brilliant shots. So thanks Gop, it was a pleasure working with you.